We are going to see the pre-formulation chapter and the important points from pre-formulation. So welcome in today's session. We will see the pre-formulation and its important points. What is pre-formulation? As the name indicates, pre means prior and formulation means while development of formulation, any formulation like tablet, capsule, suspension, emulsion. So whatever important points that you have to consider before a commencement of any formulation, that is nothing but the pre-formulation. So what are the different points, what are the different factors that you have to take into consideration before going for a formulation of particular product? So those factors are nothing but the pre-formulation. Okay, so basically pre-formulation, अगर आपने पहले NDA फाइल किया है, NDA मतलब न्यू ड्रग एप्लीकेशन. Okay, so if you file a NDA, then if you apply for clinical trials, you have to analyze certain parameters, certain points you have to take into consideration. Okay, regarding the drug. Okay, drug, excipient. Okay, so that parameters are nothing but the pre-formulation. Okay, that parameter is nothing but the pre-formulation. So that after getting approval of clinical trials, you will develop a formulation, and that formulation should be sustained in the market. For that you have to study different parameters. Okay, like solubility analysis, bulk characterization, stability of that particular formulation. So those points come under the, if you take an example of solubility, if your drug is, whether drug is water soluble or lipid soluble. Okay, so that solubility is going to affect the formulation. If it is not water soluble, then your drug will not be released in the stomach, or it not be released in the intestine to get dissolved. So you need water soluble drug, but to get absorbed or to cross across the biological membrane, you need lipid soluble drug. So solubility is important. So in the pre-formulation, so you have to take these three factors into consideration, like solubility studies, then bulk characterization and stability analysis. So in the solubility studies, you have to analyze, you have to determine the pKa of that particular compound. You should be aware about the pKa of that pKa value or log P of that particular compound. ठीक है, आपने जो API बनाया है उसको अगर बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, ठीक है, तो उसको बायोलॉजिकल एक्टिविटी अगर है कोई और आपको कंफर्म है कि इसको बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, ये कुछ ना कुछ काम में आ सकता है अपने, ठीक है, तो उसके ऊपर आप क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए अप्लाई करोगे, तो आपके पास उसका डाटा होना चाहिए ना. तो ये पूरा प्री फॉर्मुलेशन का, जब आप फॉर्मुलेशन बनाएंगे तो इसके ये पॉइंट्स आपको कंसिडर करना पड़ेगा. यार फॉर्मुलेशन आपका टिकना चाहिए मार्केट में, तो करने के लिए आपको ऐसा नहीं कि फिल्दी या फिर इनकरेक्ट फॉर्मुलेशन बनाया, कि आपने बनाया सस्पेंशन और वो सेटल हो रहा है, तो क्या यूज है उसका. आपने बनाया इमल्शन लेकिन वो ब्रेक हो रहा है, तो क्या फायदा. आपने टैबलेट बनाया लेकिन उसमें डोसेज यूनिफॉर्मिटी नहीं है, लेकिन फिर उसको कौन लेगा. ठीक है, to commence a formulation, before that you have to take into consideration certain parameters, and such kind of parameters are nothing but the pre-formulation. Okay, now I am not going to discuss in the detail each and every point, but whatever is important that will be revised over here. So you have to focus mostly on these three parameters: solubility studies. And solubility study you can analyze the solubility of drug by determination of pKa, pH, solubility profile, then common ion effect of temperature on the solubility. So what is effect of increasing the temperature on solubility, decreasing, then solubilization using co-solvent and all that, then partition coefficient of drug, dissolution parameters, bulk characterization like crystallinity and polymorphism, then hygroscopicity, micrometric properties like particle size, particle shape, particle size distribution, density, porosity, and flow properties of the powder. So if your powder or if your granule are not free flowing, if the flow of granules from the hopper of tableting machine is not proper, then you will not get a uniformity of content in your tablet. So these parameters you have to consider. Then stability analysis. So once you formulated the preparation, then it must be stable. ठीक है, वो स्टेबल भी होना चाहिए कि एनवायरमेंटल कंडीशन पे. अगर मान लीजिए कि आपका समर आता है, समर में वो स्टेबल रहना चाहिए. मान लीजिए कि आपको विंटर आता है, विंटर में भी वो स्टेबल रहना चाहिए. सो स्टेबिलिटी एनालिसिस, सो solution stability, solid state stability,
drug excipient compatibility, that you have to check before formulating the any particular formulation, because your formulation, see, एक ड्रग आपको खोजने के लिए, to discover a single drug, it worth around 800 million of US dollar. So you have to spend 800 million US dollar on the R&D of particular one molecule. So if you want to discover one molecule, you have to spend around 800 billions euro, 800 billions US dollar for its R&D, and you are not going to waste whatever molecule is there. So आपको वेस्ट नहीं करना है, उसको फॉर्मुलेशन को आपको एस्टेब्लिश करना है अच्छे से मार्केट में. तो उसके लिए क्या करना है, आपको प्री फॉर्मुलेशन की यहाँ पे ध्यान देना है कि उसका सोलिबिलिटी क्या है, आपका पार्टिकल साइज क्या है, पार्टिकल शेप क्या है, और हाइग्रोस्कोपिक है आपका पाउडर या डेलिक्वेसेंट है, ठीक है, उसका सोलिबिलाइजेशन क्या है, उसका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, उसके टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है सोलिबिलिटी पे, उसका पीएच सोलिबिलिटी प्रोफाइल क्या है, उसका पीके कितना है, पार्टीशन कोएफिशिएंट कितना है, डिसोल्यूशन कैसे होता है, उसका क्रिस्टलिनिटी और पॉलीमॉर्फिज्म है क्या उसमें, वेदर इट इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म, वेदर इट इज अ अमोर्फस फॉर्म, और उसका कोई सब टाइप है, ये आपको प्रॉपर्ली मालूम होना चाहिए, ठीक है. माइक्रोमेटिक्स प्रॉपर्टी आल्सो, लाइक पार्टिकल साइज, पार्टिकल शेप, डेंसिटी कितना है, पोरोसिटी कितना है. जब आप, अगर आपका बल्क डेंसिटी किसी मॉलिक्यूल का ज्यादा है, ठीक है, तो उसका वेट ज्यादा होगा. बल्क डेंसिटी ज्यादा है तो उसके लिए ज्यादा साइज का कैप्सूल लगेगा, ठीक है. तो यू कैन डिसाइड वेदर व्हिच डोसेज फॉर्म इज कन्वीनियंट फॉर योर पर्टिकुलर ड्रग. So for that you have to study this parameter. Just remember solubility studies, you have to do solubility studies using pKa, then pH profile, then common ion effect of temperature on the solubility, solubilization to improve the solubility of your drug, then partition coefficient, dissolution, bulk characterization like crystallinity, polymorphism, hygroscopicity, micrometrics properties like particle characterization, density, porosity, powder flow properties. Okay, so in the powder flow properties you have Carr's index, you have Hausner's ratio, you have again angle of repose. So that study will be taken under the flow properties. Particle size characterization, that is we have seen in the micrometrics. Density, porosity we have seen in the micrometrics. Then stability analysis like solution stability, solid state stability, and drug excipients compatibility. These are the three main sections of the pre-formulation. Okay, so first we will see bulk characterization, under which there is a crystallinity and polymorphism. Okay, so we'll see. Just try to focus on the cursor position of mouse. Okay, so you have one particular compound in your hand. आपके पास एक कंपाउंड है, आपके पास एक API है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है. जैसे मैंने बोला कि आप बहुत होशियार हो, आपने क्या किया, एक नया मॉलिक्यूल खोज लिया, नया मॉलिक्यूल का रिसर्च किया, नया मॉलिक्यूल सिंथेसाइज किया, ठीक है. सिंथेसाइज करने के बाद आपको अपने प्री क्लिनिकल स्टडीज किया, उसका आपको मालूम है कि इसको एक्टिविटी है, तो आपको लगा कि नहीं यार ये एक्टिविटी है, एंटी डायबिटिक एक्टिविटी है उसको, तो उसका फॉर्मुलेशन करना है आपको. तो बिफोर गोइंग डायरेक्टली टू द फॉर्मुलेशन यू हैव टू एनालाइज सर्टेन पैरामीटर्स ऑफ रिगार्डिंग दैट ड्रग, ठीक है. उसका फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज यू हैव टू एनालाइज, यू हैव टू स्टडी इट्स फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज बिफोर कमेंसिंग द formulation. Okay, so in that we will see bulk characterization, that is crystallinity and polymorphism first. Okay, because most of the time they used to ask question on this, so I have made one chart for you. So if compound, you have compound, if you see compound under microscope, okay, you have to see compound under microscope. So if it is a transparent compound, which is known as a transparent birefringence. Okay, so if it is transparent compound, either it will be transparent or it will be non-transparent under microscope. Now if it is transparent, it is known as a birefringence. Okay, means it will have a refractive index. Okay, transparent compound अगर है तो उसको refractive index रहेगा, so it is known as a birefringence. Now it depends on the number of again it is classified into two types depending upon the number of refractive index present. So if your compound has a one and more refractive index, means it has a more than one refractive index, it is known as anisotropic. अगर आपकी कंपाउंड को एक से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो उसको बोलेंगे अनिसोट्रोपिक, ठीक है. अगर आपकी कंपाउंड को सिर्फ एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो उसको बोलेंगे आइसोट्रोपिक. सो इफ योर कंपाउंड हैज टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन वन, इट इज नोन एज अनिसोट्रोपिक. एंड इफ योर कंपाउंड हैज a one refractive index only, so it is known as a isotropic.
Under anisotropy again you have uniaxial and biaxial. So uniaxial means if your compound is having 2 refractive index, it is known as a uniaxial. If your compound having 3 refractive index, it is a biaxial. Okay, so it is known as a biaxial. Now it was all about the compound. If compound is a transparent to your microscope. Now compound is not transparent. आपका compound non transparent है, transparent नहीं है, ठीक है. तो उसको उसमें क्या है, तो उसमें नॉन ट्रांसपेरेंट कंपाउंड है, मतलब क्या है उसमें तो है, एक तो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो कंपाउंड का और एक तो होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. ओके, सो इंटरनल स्ट्रक्चर इज देयर एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज देयर. So external structure of compound is known as habit. External compound of structure is external structure of compound is known as habit, and then internal structure. So external structure is habit. Means outer surface. External surface क्या है? External structure क्या है उस compound? उसको बोलेंगे अपन habit. Habitat और habit. Okay. Crystal habit आपने word सुना होगा. Crystal habit मतलब क्या? It is a external structure of that crystal. Okay. So that is a habit. Then internal structure of compound. Okay. Then internal structure of compound. So internal structure of compound is again divided into internal structure either could be crystalline or amorphous. Okay. See, non transparent compound है आपका, उसमें क्या आएगा, एक तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में. अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बोलेंगे कुछ तो उसको बोलेंगे हैबिट, और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करना है तो इंटरनल स्ट्रक्चर कोड भी आइदर क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस. इंटरनल स्ट्रक्चर 2 टाइप के होते हैं, एक तो वो कंपाउंड क्रिस्टलाइन होगा या फिर अमॉर्फस होगा. Now what is meant by crystalline? If there is a systemic arrangement of particle or there is a orderly arrangement of particle, that is known as in the crystal, that is known as a crystalline solid. Okay, as there is a orderly arrangement or as there is a systemic arrangement, वहाँ पे systemic arrangement होगा या फिर orderly arrangement होगा, compact arrangement होगा, तो वहाँ पे जो thermodynamic की एनर्जी है उसका, एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, आपने क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस देखा होगा कि सुपर सैचुरेशन होता है, बाद में हीट इवॉल्व होती है, एंडोथर्मिक होता है ना वो, तो वहाँ पे हीट इवॉल्व होगी. सो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है कि देयर इज अ ऑर्डरली अरेंजमेंट एंड सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन द क्रिस्टल लैटिस एंड इट विल हैव लो thermodynamic energy and that's why it will have a low solubility also. Okay, that is a crystalline. Second one is amorphous. Now what is amorphous? In the amorphous you will have a random arrangement of particle and you will have a high thermodynamic energy. So these amorphous particles are unstable, thermodynamically unstable. That's why they will have high energy and they will have a high solubility. Okay. Now this amorphous compounds, amorphous form of compound can be prepared by rapid precipitation और lyophilization और rapid cooling of liquid. ठीक है, आपके पास क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के लिए सैंपल है और वहाँ पे बोला है कि एक हल्के से आप स्टर करो सुपर सैचुरेशन के बाद और वहाँ पे साइड में रख दो उसको. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा. लेकिन आपने क्या किया, बहुत ही विगरसली उसको स्टर किया और उसको डायरेक्टली फ्रिज में रख दिया कूलिंग के लिए. तो वहाँ पे क्या होगा, आइडियली क्रिस्टलाइन फॉर्म शुड बी, क्रिस्टलाइन फॉर्म बनना चाहिए उसका, लेकिन वो बनेगा आपका अमॉर्फस फॉर्म. सो अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कंपाउंड कैन बी prepared by rapid precipitation, lyophilization and rapid cooling of that reaction mixture. So you will get amorphous form. Now come to the crystalline form. As I have told you, it will have a systemic arrangement or orderly arrangement. It will have low solubility and low energy. Now crystalline form can be divided into two types, either single polymer or molecular adduct. Single polymer or molecular adduct. Now first single polymer. सिंगल पॉलीमॉर्फ मीन्स क्या, वो प्योर पॉलीमॉर्फ होता है. ओके, सो प्योर क्रिस्टल होता है वो सिंगल पॉलीमॉर्फ, प्योर क्रिस्टल, उसमें कोई सॉल्वेंट वगैरह कुछ आएगा नहीं. तो सिंगल पॉलीमॉर्फ. सो इन द सिंगल पॉलीमॉर्फ आल्सो वी हैव टू सब टाइप, आइदर इट विल बी मोनोट्रोपिक और इट विल बी एनिसोट्रोपिक. सो व्हाट डू मीन बाय मोनोट्रोपिक एंड एनिसोट्रोपिक? सो इफ ऑल पॉलीमॉर्फ्स आर अनस्टेबल एट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि अगर कोई टेम्परेचर प्रेशर पे उसके जितने भी पॉलीमॉर्फिक फॉर्म है उस कंपाउंड के वो अनस्टेबल है, तो यू कैन कॉल इट एज अ मोनोट्रोपिक. ओके, सो सिंगल पॉलीमॉर्फ, इफ द polymorphic form of compound is unstable at all the temperature and pressure, you call it as a monotropic. Now anisotropic means what? All polymorphs are isolable. For example, a certain compound has a different type of polymorphs, so if you are able to isolate that, so you can call it as anisotropic. Okay, and if a particular compound has a polymorph
and it is not isolable or it is unstable at all the temperature and pressure. कि normally क्या होता है कि compound का polymorphic form होता है A, B, C. तो कोई polymorphic form कोई particular temperature पे stable होता है. मान लीजिए कि chlorphenicol palmitate कि there are 3 polymorphic form of chlorphenicol palmitate, ठीक है, A, B, C. मान लीजिए कि polymorphic form A 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे स्टेबल है, polymorphic form B 40 डिग्री सेल्सियस के अराउंड स्टेबल है, polymorphic C फॉर्म जो है उसका मोर देन 80 डिग्री सेल्सियस लगता है उसका. तो आप पॉलीमॉर्फिक फॉर्म C यूज करके तो फॉर्मुलेशन नहीं बना सकते कि आपका नॉर्मल रूम टेम्परेचर क्या रहेगा, तो वो रहेगा अराउंड 35-40 डिग्री सेल्सियस. सो यू हैव टू चूज फॉर्म B. सो दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस, कि आपको रीजन मालूम होना चाहिए कि ये पॉलीमॉर्फिज्म क्यों पढ़ना है, या आपकी कंपाउंड के बारे में आपको क्यों मालूम होना चाहिए कि यू कैन प्रिसाइजली डिसाइड द फॉर्मुलेशन. Okay, so that polymorph which is stable at room temperature, you can take that polymorph or you can prevent the formation of other polymorph. Okay, so what is desired? So that desired polymorph you can isolate and you can formulate the formulation. So that's why we are studying the polymorphism. Okay, so anisotropy means all polymorph are isolable. Monotropy means the polymorph is unstable at temperature and pressure. Second one is a molecular adduct. Molecular adduct, as the name indicates, adduct means there is some addition. What is addition? Addition of solvent. During the crystallization process, if your crystal takes some solvent, जो आप सुपर सैचुरेशन के लिए जो सॉल्वेंट यूज करते हैं, तो वो सॉल्वेंट ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन कभी कभी क्या होता है कि क्रिस्टल के बीच में आपका वो सॉल्वेंट ट्रैप हो जाता है. ओके, सो दैट इज नोन एज अ मॉलिक्यूलर अडक्ट. अभी वो ट्रैप जो सॉल्वेंट हो चुका है क्रिस्टल फॉर्मेशन में, मतलब 1:1 है तो उसको बोलेंगे स्टोचियोमेट्रिक, और वो 1:2 मतलब इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में है तो उसको बोलेंगे स्टोचियोमेट्रिक, और इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में नहीं है तो उसको बोलेंगे नॉन स्टोचियोमेट्रिक. ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन व्हाट हैपेंस? ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन समटाइम्स योर सॉल्वेंट गेट्स एंट्रैप्ड इनटू द क्रिस्टल फॉर्मेशन, and depending on that they are known as a molecular adduct. They are further classified into non-stoichiometric and stoichiometric. So if the solvent get trapped into the inside the crystal in the proportion of 1:1, then it is known as a stoichiometric. अगर solvent उसमें ट्रैप हो गया 1:1 प्रोपोर्शन में तो उसको बोलेंगे स्टोचियोमेट्रिक. तो उसका प्रोपोर्शन सॉल्वेंट का अलग है, 1:1 नहीं है, ज्यादा है कम है, उसको बोलेंगे नॉन स्टोचियोमेट्रिक. ओके, सो स्टोचियोमेट्रिक, नॉन स्टोचियोमेट्रिक जो मॉलिक्यूलर अडक्ट होते हैं, सो दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज cage, layer and channel depending upon the shape. Okay, now this cage is also known as a clathrate. This cage is also known as a clathrate. Then stoichiometric means 1:1 solvent plus crystal. Okay, now if the solvent is other than water, then we call it as solvates. अगर यहाँ पे जो क्रिस्टलाइजेशन में सॉल्वेंट यूज किया है अगर वो वाटर नहीं है, दूसरा है, तो आप क्या बोलेंगे उसको? सॉल्वेट्स. अगर वो वाटर है तो उसको बोलेंगे हाइड्रेट्स. सो इफ द सॉल्वेंट ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन गेट एंट्रैप्ड इनटू द क्रिस्टल फॉर्मेशन, देन वी कॉल इट इज अ मॉलिक्यूलर अडक्ट, एंड दे अगेन फर्दर क्लासिफाइड इनटू स्टोचियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोचियोमेट्रिक. स्टोचियोमेट्रिक मींस 1:1 proportion. If your solvent get entrapped into crystal 1:1 molecule, then it is known as a stoichiometric. And if it is not in a proportion of 1:1, then it is a non-stoichiometric. Non-stoichiometric are also further classified into cage, layer and channel. This cage is also known as a clathrate. Okay, then stoichiometric means 1:1 proportion, and if the solvent is other than water, then we call it as a solvates, and if it is a water, then we call it as a hydrates. ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? क्विकली रिवाइज करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म. अगर आपको कंपाउंड आपने देखा, या इफ यू सी द कंपाउंड अंडर माइक्रोस्कोप, इफ योर कंपाउंड इज, इट कुड बी आइदर ट्रांसपेरेंट और नॉन ट्रांसपेरेंट. इफ इट इज अ ट्रांसपेरेंट, ओके, इट इज बिकॉज ऑफ द passing the light. Okay, that is transparent. So transparent known as a birefringes. And now if it is transparent because of it is having refractive index. Okay, so if it is having 1 plus refractive index means more than 1 refractive index, it is known as anisotropic. If it is having only 1 refractive index, it is known as isotropic. Okay, so anisotropic is
further divided into uniaxial or biaxial. If your compound is having 2 refractive index, it is known as uniaxial. If it is having 3 refractive index, it is known as a biaxial. If your compound is non-transparent, means it is having some form. Okay, so what is that form? Suppose that there is one form, crystalline form. Okay, crystalline amorphous is another part, but your compound is non-transparent, it has a specific structure. Okay, so it has a specific structure. Now non-transparent compound will have a specific structure, and the external structure of that compound is known as a habitat or habit, and internal structure may be divided into either it may be crystalline or amorphous. Now amorphous form of drug can be prepared by rapid precipitation, lyophilization or rapid cooling. Then crystalline is divided into either single polymorph or molecular adduct. So single polymorph is further divided into monotropy or anisotropy. So depending upon the type of isomer, type of polymorph. So if polymorph is unstable at all temperature, pressure, is known as a monotropic. All polymorphs are isolable, then it is known as anisotropic. If during the crystallization, if solvent gets entrapped into the crystal, then it is known as a molecular adduct. Again it is further divided into either stoichiometric or non-stoichiometric. अगर प्रोपोर्शन उसका सॉल्वेंट का और क्रिस्टल का सेम है उसको बोलेंगे स्टोइचियोमेट्रिक. अगर प्रोपोर्शन अलग है तो उसको बोलेंगे नॉन स्टोइचियोमेट्रिक. नॉन स्टोइचियोमेट्रिक का 3 फॉर्म अलग होता है, केज, लेयर, चैनल. ये केज जो है उसको बोलेंगे क्लैथरेट. अगर इसके बारे में ज्यादा पढ़ना है आपको तो यू कैन रीड फ्रॉम बुक. ओके, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक प्रोपोर्शन दे आर नोन एज सॉल्वेट्स और हाइड्रेट. अगर जो सॉल्वेंट है आपका क्रिस्टलाइजेशन का वो अदर देन वाटर है तो उसको बोलेंगे सॉल्वेट्स. If the solvent of crystallization is other than water, it is known as solids. If it is a water, it is known as hydrate. So this is the polymorphism. For the pre-formulation studies, you require a different type of techniques, analytical techniques. Okay, and you require a sample. So it is just a quick chart. So in the microscopy, you will require a sample requirement is a 1 milligram. Okay, so if you want to study your compound under a microscope, so 1 milligram of sample is enough. Then if you want to study your compound the hot stage microscopy, then again 1 milligram is required. So it is also known as a fusion method or hot stage microscopy. अब ये करना है, क्यों करना है? माइक्रोस्कोपी में क्या आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा? So you will get a information regarding the external shape of the particle size, external shape, etc. In the hot stage microscopy or fusion method, you will come to know the melting temperature of your crystal. Okay, you will come to know the boiling melting point of the compound, etc. in the hot stage microscope. Then DSC and DTA, differential scanning calorimetry and differential thermal analysis. Again in these two you will get idea about the sublimation, then vapor pressure, then boiling point, melting point of the compound. So it will require 2 to 5 milligram of sample. Then IR spectroscopy. So using IR spectroscopy you can analyze the type of crystals and you can analyze the water content of that molecule. Okay, so अगर उसमें वाटर मॉलिक्यूल का है तो उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो ब्रॉड पिक आता है आपको वो मिलेगा. Another method, X-ray diffraction. So this X-ray diffraction method is used for to study the crystal pattern of the crystal. Okay, पैटर्न ऑफ द क्रिस्टल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल. आपके पाउडर पे एक्सरे का रेज बम्बार्ड किया जाएगा और वो आपका जो पाउडर है वो उसके पर्टिकुलर क्रिस्टल होगा, वो क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट करेगा. ओके, उसको डिस्पर्स करेगा. तो दैट पैटर्न, whatever specific pattern obtained on the graph is a specific pattern for a specific powder. अगर आपने पैरासिटामोल पाउडर का एक्सरे डिफ्रैक्शन किया, ठीक है, तो उसका जो पैटर्न आएगा तो वो दूसरे पाउडर के साथ में मैच नहीं होगा क्योंकि वो पाउडर का क्रिस्टल अलग है, दूसरे पाउडर का क्रिस्टल अलग है. ठीक है. देन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. सो एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए आपको लगेगा सैंपल 500 मिलीग्राम. देन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी 2 मिलीग्राम. देन थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस TGA. Then again 10 milligram. So in the TGA, thermogravimetric analysis, water molecule is present in the crystallization. Water of crystallization can be determined in the TGA. Is monohydrate, dihydrate, trihydrate or anhydrous. So that can be determined by thermogravimetric analysis. Then solubilization and dissolution. For the study of solubilization and dissolution, you require
sample in milligram to gram. Now polymorphism, what is polymorphism? It is nothing but the ability of compound. It is nothing but the ability of compound to crystallize more than one crystalline form. If your compound is able to crystallize more than one crystalline form, it is known as a polymorphism. Why there is need of study of polymorphism in the pre-formulation? So this polymorphism will affect the stability and solubility of your compound. अगर stability solubility affect करता है तो मान लीजिए कि solubility affect करता है, solubility affect करेगा तो क्या होगा, bioavailability affect होगा, तो उसका effect भी affect होगा. So that's why. So this will affect the solubility of your drug, stability of your dosage form, and that's why in the bioavailability and its usefulness. So that's why you have to study the polymorphism before formulation of your product in the final dosage form. Chloramphenicol palmitate will have जो chloramphenicol है antibiotic है, ठीक है, so that is a broad spectrum antibiotic chloramphenicol. So it will have two crystalline form. It will have crystalline form as well as amorphous form. But in the crystalline itself, it will have a different polymorphs A, B, and C. So these three polymorphs, amongst these three polymorphs, polymorph B, chloramphenicol palmitate polymorph B, is a more water soluble, more solubility. It is having more solubility, and that's why it is having good bioavailability as compared to others. तो आप ये सोचेंगे कि आपने अगर पॉलीमॉर्फ ए ले लिया और फॉर्मुलेशन बनाया तो आपका तो बायोअवेलेबिलिटी कम होगा ना उसमें. So you have to take into consideration whether your compound has a polymorphism or not. So if it is having polymorphism, then which polymorph is stable? So you have to isolate that and you have to use that one. Okay, so that's why. Okay, chloramphenicol palmitate has three crystalline form A, B, C, and also amorphous form. So amongst these polymorph B is a more soluble and it will have more bioavailability. Physicochemical properties of drug will vary with the internal structure of the drug. Internal solid structure of drug, for example, melting point, hardness, solubility, optical properties, vapor pressure, etc. So these property will vary depending upon the internal structure of the compound, and that's why we have to study the internal structure of compound also before making a decision of formulation, and that is nothing but the pre-formulation. So melting point. So see, polymorph जो होते हैं वो क्या होते हैं? That is a different crystalline form of compound, and now these different crystalline form of compound will have different physicochemical properties. अगर polymorph A, B, C आपने देखा तो A का physicochemical properties अलग होगा, B का अलग होगा. मतलब अगर A का melting point 10 डिग्री सेल्सियस है, B का अलग होगा, C का अलग होगा, तो ऐसा. So that's why you have to study the polymorphism. Different methods that are used in the study of pre-formulation. So method and application. So microscopy, it is used for to study the nature of substance, crystal morphology. Okay, so microscopy में क्या आप देख सकते हो, माइक्रोस्कोपी में क्या ऑब्जर्व कर सकते हो कि आप क्रिस्टल का शेप ऑब्जर्व कर सकते हो, क्रिस्टल का साइज आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी, ठीक है. Then fusion method, that is hot stage microscopy, again study of crystal, then melting of crystal, etc. Then DSC, DTA, differential scanning calorimetry, and differential thermal analysis. So it is used to study the polymorphism, crystal purity. Particularly this differential scanning calorimetry is used for the study of crystal purity. Now if you carry out the DSC, differential scanning calorimetry of your compound, and if you get a sharp peak, then your crystals are pure. Means sharp peak indicate pure crystal. अगर आपका पिक शार्प है, मतलब एकदम तीखा है, नोक तीखा है, तो उसको बोलेंगे प्योर क्रिस्टल. अगर वो ब्रॉड है, अगर तीखा है मतलब नैरो है, ऐसा एकदम तीखा, तो उसको बोलेंगे शार्प पिक, दैट इज अ प्योर क्रिस्टल. अगर वो ब्रॉड है तो दैट इज इम्प्योर क्रिस्टल. Then using IR spectroscopy you can determine the water content and you can also study the crystal pattern. In X-ray diffraction, using X-ray diffraction you can study crystal shapes and outer surface of the crystal. Then using scanning electron microscopy you can study the crystal morphology and all that. Even in thermogravimetric analysis you can study the crystal, then water of crystallization, monohydrate, dihydrate, trihydrate, anhydrates, okay, etc. Using NMR also you can study the crystal. HPLC, अभी if you subject your compound to thermogravimetric analysis, आपने thermogravimetric analysis के लिए आपका compound subject किया,
तो क्या होगा, थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस में क्या होता है कि y एक्सिस पे होता है आपका परसेंट डिग्रेडेशन और x एक्सिस पे होता है आपका टेम्परेचर। मतलब जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे आपके कंपाउंड में क्या चेंजेस होता है, कितना उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर रिटेन होता है, उसका स्टडी होता है थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस। स्ट्रक्चर आपका डिग्रेड हो गया तो कैसे मालूम करेंगे आप? सो यू कैन एनालाइज द डिग्रेडेड स्ट्रक्चर बाय यूजिंग द HPLC, ओके, एंड दिस HPLC इज नोन एज स्टेबिलिटी इंडिकेटिंग एसे। दिस वाज अगेन अ क्वेश्चन इन नाइपर। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन नाइपर के कवर हो जाते हैं। सॉलिडिटी एंड डिसोल्यूशन, यू कैन सॉलिडिटी एंड डिसोल्यूशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द बायो अवेलेबिलिटी। अगर आपका कंपाउंड सोल्यूबल ही नहीं है वाटर में या फिर आपकी गैस्ट्रिक फ्लूइड में, सोल्यूबल है ही नहीं, मतलब स्टमक में भी नहीं है, इंटेस्टाइन में भी नहीं, so there will be no dissolution of your compound and there will be no bioavailability. So if solubility and dissolution, that is very important criteria for designing a dosage form. Moisture content, see moisture content means number of water molecules present in your compound, not in the crystal. That is not present in the internal structure of crystal. कि क्रिस्टल के अंदर का वाटर नहीं है, दैट उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, वो अलग होता है। ये मॉइस्चर कंटेंट मतलब क्या, कि एनवायरनमेंट से जो मॉइस्चर एनवायरनमेंट में जो ह्यूमिडिटी है आपका, सो व्हाट एवर मॉइस्चर इन द ह्यूमिडिटी इज देयर, सो इफ दैट इज एब्सॉर्ब बाय कंपाउंड, सो दैट शुड बी विद इन द लिमिट, ओके, बिकॉज सी एब्सॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, अगर आपके कंपाउंड ने मॉइस्चर एब्सॉर्ब किया तो दैट विल लीड्स टू कॉम्प्लिकेशंस। मॉइस्चर एब्सॉर्ब किया तो उसमें क्या होगा, हाइड्रोलिसिस भी हो सकता है, उसका स्टेबिलिटी अफेक्ट हो सकता है। उसने अगर मॉइस्चर एब्सॉर्ब किया तो उसका जो फ्लो प्रॉपर्टीज है वो अफेक्ट होगा। सो दैट्स व्हाई सो मॉइस्चर कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन। सो इट इज डिटरमाइंड बाय डिफरेंट मेथड्स एंड व्हाट इज इट, सो डिपेंडिंग अपॉन द मॉइस्चर कंटेंट, कंपाउंड में भी आइदर हाइग्रोस्कोपिक, मींस इफ योर कंपाउंड इज एबल टू absorb the moisture from air, it is known as a hygroscopic, and it may be either hygroscopic or delicquescent if your compound is able to absorb the moisture from the environment up to extent that it itself get dissolved in the water, so that is a delicquescent। मतलब हाइग्रोस्कोपिक में क्या होगा कि ये कंपाउंड एब्सॉर्ब करेगा मॉइस्चर, बट इतना नहीं कि वो डिजॉल्व होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत करेगा। डेलिक्वेशन कंपाउंड मतलब क्या, ये कंपाउंड इतना ज्यादा वाटर एब्सॉर्ब करेगा एनवायरनमेंट से कि पूरा लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। तो मान लीजिए आप देख लीजिए जो बारिश के दिन होते हैं, तो बारिश के दिन में क्या होता है कि ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, सो देयर इज अ मोर ह्यूमिडिटी इन द एनवायरनमेंट इन द रेनी सीजन। एंड नाउ आपका जो सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, तो आप देखो आपने अगर गलती से भी आपका जो डिब्बा है सॉल्ट का वो खुला रख दिया तो उसका पूरा पानी बन जाता है, दैट इज अ डेलिक्वेशन। Changes in the moisture level will affect significantly the chemical stability, flowability of powder, compactability of compound or drugs. So that's why you have to take into consideration the moisture content. The European Pharmacopoeial Technical Guide has classified the degree of hygroscopy into 4 classes based upon the static method. Okay, so they have kept temperature, then humidity constant. So at a 25 degrees Celsius for 24 hours at 80% relative humidity, ये इसके ऊपर ये कांस्टेंट रख के उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एनालाइज किया, and they have classified the compound into 4 types. First one is a slightly hygroscopic, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर में, so it is very important. So what do you call it slightly hygroscopic? When you call the compound is slightly hygroscopic, आपको क्या करना है कि स्पेसिफिक अमाउंट लेना है आपका, मान लीजिए कि 10 ग्राम आपने वेट किया, 10 ग्राम कंपाउंड आपका पाउडर, 10 ग्राम पाउडर आपका वेट किया आपने, और उसमें क्या किया, 10 ग्राम पाउडर आपने ये कंडीशन में रख दिया शेल्फ में कि वहाँ पे एनवायरनमेंट में 80% ह्यूमिडिटी मेंटेन किया है और टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, और 24 घंटे के लिए रख दिया वहाँ पे। आपने इनिशियल वेट कितना लिया था, 10 ग्राम। अभी आपने बाद में 24 आवर्स के बाद में जाके उसको देखा है कि उसका वेट उतना ही है या बढ़ गया। वेट बढ़ गया मतलब क्या होगा कि उसने वाटर एब्सॉर्ब किया होगा वहां से एनवायरनमेंट से। सो इफ दैट इंक्रीज इन वेट इज दैट डिपेंडिंग अपॉन दैट इंक्रीज इन द वेट ऑफ कंपाउंड, सो कंपाउंड इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक, फर्स्ट वन इज स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक। अगर आपके कंपाउंड में इफ इंक्रीज इन वेट इज लेस, increase in weight is a more than 0.2% weight by weight, and but it is less than 2% weight by weight,
अगर इंक्रीज इन वेट, आपके कंपाउंड में उसका इनिशियल वेट था 10 ग्राम, उसका बढ़ के अगर थोड़ा बढ़ गया वेट उसका, लेकिन वो कितना बढ़ गया 0.2 वेट बाय वेट से ज्यादा है, लेकिन 2% से कम है, 0.2% से ज्यादा है, 2% से कम है, तो उसको बोलेंगे स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक। इफ इंक्रीज इन वेट इज मोर देन 0.2% वेट बाय वेट but it is less than 15% weight by weight, then you can call it as a hygroscopic. Then if compound is the weight increase in the weight is more than 15% weight by weight, then you can call it as a very hygroscopic. And delictfulness means the compound will absorb sufficient water to form a solution, that is a delictfulness. So there was a question in GPAT 21 on this, what is meant by very hygroscopic. If increase in the weight of compound at a specific condition like 25 degrees Celsius 24 hours 80% relative humidity, if there is increase in weight less than 2%, it is known as slightly hygroscopic. If there is increase in weight less than 15%, then it is known as hygroscopic. If there is increase in weight of compound more than 15%, it is a very hygroscopic. And if it absorbs the water and becomes solution, then it is a delictfulness. ये याद रखो, ये आपको पूरा याद ही रखना है। स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, डेलिक्विशन क्या होता है, वेरी हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। ओके, नाउ डिफरेंट मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द व्हाट मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट डिटरमिनेशन करने के लिए कितने मेथड्स हैं? सो डिफरेंट मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग द डिटरमिनेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। फर्स्ट वन इज द TGA, थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस। सेकंड इज गैस क्रोमेटोग्राफी, सेकंड वन इज गैस क्रोमेटोग्राफी, थर्ड वन इज योर ग्रेविमेट्री। Then gravimetry means ये जो मेथड है, it is nothing but the gravimetric analysis. Okay. Next one is a Curl-Fisher reagent. Okay. Using Curl-Fisher reagent also you can determine the moisture content. And this is important now. What is the composition of Curl-Fisher reagent? So that is also sometimes they used to ask the composition. So your Curl-Fisher reagent will have pyridine, then methanol, then it will have iodine and potassium iodide. Okay, so remember the composition of Curl-Fisher reagent और Curl-Fisher reagent, इसका composition क्या है? pyridine होगा, उसमें methanol होगा, उसमें क्या होगा, और potassium iodide and iodine होगा, ये सब उसमें होगा। वाटर नहीं होगा, वाटर आपको मेजर करना है, हर एक कंपाउंड में कितना है मेजर करना है, कैसे? Curl-Fisher से। तो ये याद रखो, कंपोजिशन यहाँ पे मेंशन नहीं किया मैंने, याद रखो pyridine, मिथेनॉल, उसके बाद आपका पोटेशियम आयोडाइड। नेक्स्ट वन इज वेंट ऑफ क्लोर। मोलर सोलिडिटी, टेम्परेचर एट विच द सोलिडिटी एंड वेपर प्रेशर ऑफ polymorph आर सेम। सो यू हैव डिफरेंट polymorphs, polymorph 1, 2, 3. मोलर सोलिडिटी ऑफ polymorph is defined as the temperature at which the solubility and vapor pressure of polymorph are the same. Temperature at which solubility and vapor pressure of the polymorph is same, that solubility is known as a molar solubility, and this was studied by Ventop, and that is known as Ventop plot. Bridging solvent. So what is bridging solvent? So if you want to convert one polymorph into another polymorphic form, okay, so you require a medium. That medium is nothing but the solvent. That solvent is known as a polymorph. That solvent is known as a bridging solvent. So bridging solvent is used to convert one polymorph into another polymorph. Remember, यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीजें आपको बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि सब कुछ अगर बोलूंगा तो इसमें ये मेरा 3 या 4 लेक्चर इसमें जाएगा। इफ यू वांट टू रीड मोर अबाउट दिस प्रीफॉर्मुलेशन, यू कैन रीड फ्रॉम Leon Lackman. Then next one is a fine particle characterization, कि आपका जो पार्टिकल साइज है उसका क्या है, उसका पार्टिकल साइज शेप क्या है, उसका फ्लो क्या है, कितना है, पोरोसिटी क्या है, डेंसिटी क्या है, वो सब इसमें आता है। ठीक है, सो बल्क फ्लो फॉर्मुलेशन, होमोजेनिसिटी, surface area, control process like dissolution, chemical reactivity is affected by shape, size, morphology of the powder. Okay, and that covers under the particle characterization. You have to characterize the particles of your powder. Okay, method used for particle size characterization are sieve analysis. We have seen details in the detailed sieve analysis in the micromeritics. sieve analysis के बारे में micromeritics chapter में देखा है अपने sieve analysis में। ठीक है, so if particle size is more than 100 microns, then you can use sieve analysis. Optical microscopy और light microscopy, ये सब particle size उसका range
उस टाइम पे बोला है। कल्टर काउंटर मेथड के बारे में बोला है। स्ट्रीम काउंटिंग मेथड इज HIAC, इसका लॉन्ग फॉर्म अभी याद नहीं मुझे, लेकिन याद रखो। पार्टिकल सरफेस एरिया, इफ यू वांट टू डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ योर पार्टिकल, कि आपका एक पार्टिकल एक माइक्रोन में रहता है, उसका सरफेस एरिया कितना है, वो कैसे करेंगे आप, ठीक है। सो फॉर दैट देयर इज वन इक्वेशन नोन एज BET, बेट इक्वेशन, Brunauer-Emmett-Taylor equation, बेट इक्वेशन. So it is used to determine the surface area of particle, okay, and this method is based upon the adsorption of gas, adsorption of liquid nitrogen, okay. So liquid nitrogen at minus 196 degrees, minus 196 degrees Celsius, at a minus 196 degrees Celsius. So liquid nitrogen is allowed to adsorb on the surface, allowed to absorb on the particles, okay. Once nitrogen is adsorbed on the particles, okay, then you can calculate the surface area of that particle. How? Okay, nitrogen is nothing but the gas, okay, nitrogen is nothing but the gas, and you know what is the particle size of what is the size of one molecule of nitrogen. So one atom of nitrogen will occupy 16 angstrom unit area, ठीक है। अगर एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का 16 एंगस्ट्रॉम यूनिट एरिया है तो आपके पार्टिकल के ऊपर कितना नाइट्रोजन बैठा है, एडसॉर्ब हुआ है, उसके ऊपर, उसके बेसिस पे आप ये कर सकते हो पार्टिकल साइज, पार्टिकल एरिया कितना है उसका, ओके। सो सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल कैन बी मेजर्ड बाय BET, Brunauer-Emmett-Taylor equation, that is known as Bate equation. In this you have to use liquid nitrogen at minus 196 degrees Celsius, and remember one nitrogen atom is equal to 16 angstrom unit. ये क्वेश्चन नाइपर में पूछता है, ठीक है। Now how you can calculate the how much amount of gas is adsorbed on the particle, ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्या होता है, आइडियल गैस लॉ जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका जो इक्वेशन है उसके इक्वेशन को डेरिवेटाइज करके बाद में कैलकुलेट करते हैं वो, कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन दैट इज एडसॉर्ब्ड ऑन द पार्टिकल, कितना एटम एडसॉर्ब हो चुका है पार्टिकल के ऊपर, उस कैसे करेंगे कि आइडियल गैस लॉ वगैरह यूज करके उसका बाद में करते हैं। दैट इज द बियॉन्ड स्कोप ऑफ दिस लेक्चर। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। इन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द सरफेस मॉर्फोलॉजी एंड टेक्सचर। सो फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ योर मॉर्फोलॉजी ऑफ surface morphology of powder and texture of powder, so scanning electron microscopy is used. So particles are made superconductive by using plating. So particles are gold plated, or compound is gold plated to make them superconductive. Next one is the bulk density. It is important, if high dose of capsule is required, then apparent bulk density is calculated. A compound has a high bulk density, then you require a larger size of capsule, bulk density. इसका bulk density ज़्यादा है, उसके लिए कैप्सूल का साइज भी ज़्यादा लगेगा। Next one is the true density. True density is nothing but the bulk density minus void volume. We have seen in this in the micrometers. Tap density, true density, जिसको true density वो पाउडर लेके उसको टैपिंग करेंगे। Tap density is determined by pouring the known concentration of known amount of powder in a cylinder, and then it is subjected to number of tappings, 1000 tappings. कि 1000 tappings के बाद उसका डेंसिटी करना है आपको। जैसे मान लीजिए कि आपका एक पाउडर है, पाउडर लिया आपने 100 ml मेजरिंग सिलेंडर में, पाउडर डाला है, तो पहले उसको डेंसिटी कैलकुलेट कीजिए आप। डेंसिटी इज नथिंग बट द मास अपन वॉल्यूम, कि मास कितना पाउडर लिया अपन 10 ग्राम लिया, तो उसका वॉल्यूम कितना है 12, तो कैलकुलेट कीजिए 10/12, तो आपको आएगा बल्क डेंसिटी, ठीक है। नाउ टैप डेंसिटी मतलब क्या है, कि वो सिलेंडर आपको टैप करना है सरफेस पे, तो नंबर ऑफ टैपिंग्स कितना है 1000 टैपिंग्स। उसके बाद में उसका जो डेंसिटी आता है उसको बोलते हैं टैप डेंसिटी। टैपिंग करने के बाद उसका अबेस है, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। नाउ फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर. सो फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर इज डिटरमाइंड बाय compressibility index, angle of repose, okay, then Hausner's ratio. So there are 3 methods which can be used for determination of flow properties of powder. So first one is a Carr's index, or it is known as a compressibility index. So depending on this, either powder will be free flowing or powder will be non free flowing. So non free flowing powder means it is a cohesive powder, okay.
So what is Car's index? Car's index is nothing but the compressibility index. It is a measurement of flow properties of powder. Okay, तो आपके पाउडर का फ्लो कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है Car's index. It is a measure of flow property of powder. Also, angle of repose, Hausner's ratio is also measure of flow property. Percent compressibility we have seen in the last lecture also. Tap density minus bulk density divided by tap density into 100. Tap density minus bulk density divided by tap density into 100. That is a formula. If Car's index is in between 5 to 12, then the flow of that powder is excellent. ये important है याद रखो. So if Car's index is 5 to 12, then flow is excellent. If it is between 10 to 16, it is a good flow. Then if Car's index is between 18 to 21, then the flow of powder is passable. If Car's index is between 23 to 35, the flow of powder is powder flow is poor. If Car's index is between 33 to 38, it is a very poor flow. Okay. If it is more than 40, then very poor flow. So just remember जो initial values होते हैं जैसे excellent flow का कितना है. Car's index is between 5 to 12, it is excellent. ये याद रखो, ये important है. उसके बाद if it is less than, if it is more than 40, then the flow of powder is very poor. If Car's index is more than 40, powder flow is very poor. ये दो याद रखो, excellent and very poor. मैक्सिमम टाइम्स ये दो नहीं पूछते, ये बीच में का कभी पूछ लेते, कभी नहीं पूछते. और नेक्स्ट वन इज हाउसनर्स रेशो. व्हाट इज हाउसनर्स रेशो? टैप डेंसिटी डिवाइडेड बाय बल्क डेंसिटी. टैप डेंसिटी डिवाइडेड बाय बल्क डेंसिटी इज नथिंग बट द हाउसनर्स रेशो. नाउ हाउसनर्स रेशो विल वेरी फ्रॉम 1.2 to 1.6. If it is 1.2, that means powder is a free flowing. If it is 1.6, that means powder is a cohesive. Okay, you can see in the chart, this chart. Hausner's ratio type of flow. So Hausner's ratio is between 1 to 1.11, then it is excellent flow. If it is 1.12 to 1.18, then it is good. If Hausner's ratio is 1.19 to 1.25, this is fair. Then if Hausner's ratio is 1.26 to 1.37, then the flow of powder is possible. Okay, then Hausner's ratio, if Hausner's ratio is equal to, is between 1.35 to 1.45, it is poor flow. If it is between 1.46 to 1.59, it is very poor flow. Then if it is more than 1.60, then it is very poor flow. So just remember excellent and poor flow, excellent and very poor flow. The next one is the angle of repose. So angle of repose we have seen. So if you take a powder and if you take a powder and if you pass the powder through a granule, the powder will become a one pile. Okay, so you have to measure the height of that pile and you have to measure the diameter of that pile. Okay, now angle, you can calculate the angle of repose. So it is nothing but the tan theta is equal to 2h divided by d. Tan theta is equal to 2h divided by d. That is the angle of repose. Here h is nothing but the height of pile and d is nothing but the diameter of powder. Okay, so you have conducted this experiment in your college. आपने कॉलेज में ये एक्सपेरिमेंट किया होगा कैसे करना है. Now what is important? Angle of repose and type of flow, that is important. So if angle of repose is between 25 to 30, then the flow of powder is excellent. If it is between 31 to 35, it is good flow. If it is between 36 to 40, then you call it as a fair flow. If it is if angle of repose is between 41 to 45, it is possible. If angle of repose of powder is between 46 to 45, then it is poor flow. If it is between 56 to 65, it is very poor flow. If it is more than 66, it is very poor flow, very poor. Okay, so just try to remember where is excellent, where is max. ये एक दो बार आया है excellent flow, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. Now next one is a solubility analysis. Solubility analysis, whether your drug is soluble in water or not, whether your drug is soluble in lipid or likewise, you have to analyze that. So focus on the drug solvent system that occurs in a pre-formulation solubility that affects the bioavailability. So solubility analysis will focus on the drug solvent system, drug solvent interaction. Your drug and the solvent will have more interaction. अगर interaction solvent में और drug में ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे more soluble. अगर solvent drug solvent interaction कम है तो उसको बोलेंगे poorly soluble.
So it is very important to analyze the solubility for formulation before going to formulate your product. अगर आपको कोई सिरप बनाना है या फिर कोई लिक्विड ओरल बनना है, ठीक है, तो आपको मालूम ही नहीं उसका सोलिबिलिटी वाटर में है या फिर लिक्विड में है या फिर किस में है, और आपने बना दिया वाटर में, वो हो गया सेटल, ऐसा नहीं चलेगा. So you have to make sure that the solubility of your drug is there or not. Now solubility can be increased by various means. Solubility can be increased by either adding of different solvent, water soluble solvent like ethanol, then propylene glycol, glycerine. So these are known as increase in the solubility of compound by addition of water soluble solvent like ethanol or propylene glycol or glycerine. So that is the phenomenon is known as co-solvency. इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आया था, आपको याद रखना है. So what is co-solvency? Co-solvency means increase in the solubility of drug by addition of water soluble solvent like ethanol or propylene glycol or glycerine, so that the solubility of drug will be increased. That is nothing but the co-solvency. Now how these solvent will increase the solubility? आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट अगर इन दोनों में अगर इंटरेक्शन नहीं है, मीन्स इंटरेक्शन नहीं मतलब इंटरेक्शन क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ देयर इज हाइड्रोफोबिसिटी. मान लीजिए कि आपने एक पाउडर लिया और वाटर डाला उसमें, वो सोल्यूबल नहीं हो रहा है उसमें, फोबिसिटी. सो देयर इज अ हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स ओवर देयर. ओके, so there is a hydrophobic bond. If your compound is not soluble in water, means compound in water will show hydrophobic bond. Okay, hydrophobic bond. Now these co-solvents like your ethanol, propylene glycol, then glycerine, they will decrease the hydrophobic bonds, and that's why they will increase the solubility, and this phenomenon is known as a co-solvency. Okay, this was question in GPAT 2019, I think. Or solubility analysis can be done by HPLC, UV, GC, fluorescence spectroscopy. Now solubility analysis can be done by determination of pKa. pKa means dissociation constant. Okay, so you can determine the dissociation constant of the compound. Determination of pH solubility profile. Solubility analysis can be done by determination of pKa, pH solubility profile. Then temperature dependence means if there is increase in temperature, there will be increase in solubility or not. Dissolution, then solubility product. Solubilization mechanism I have told you.